Yes. 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 Hello? Hello? Yes, ma'am. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay, we are starting it within 5 minutes.
बाकी स्टुडंट्सला पण सांगा जॉईन व्हायला. ओके मॅम. हॅलो हॅलो. Yes, sir. हॅलो, कोचे सर इम्रानला कॉल केला का? कोचे सर, आनंद, आनंद सर, हो मॅडम. कोचे सरांना विचार इम्रानला कॉल केला का जॉईन व्हायला, हो विचारतो. की मी करू कॉल? एक मिनिट. सर फोनवर बोलतात. कॉल जॉईन झालेत मॅडम. रिसोर्स पर्सन जॉईन झाले आहेत मॅडम. हॅलो. हो 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 हो, मॅडम. मोहसिन शेख आहे. हो जॉईन झाले आहेत ते. हा हा, करतोय तो व्हाईट बोर्ड वर घेणार आहे क्लास. हो मॅडम. हो तर त्याला
सुरू करायचं का? हेलो हेलो। भाई ऑडिबल तो उसमें आवाज आ रहा है क्या? देख लो। हाँ हाँ हाँ, आवाज. हेलो, हेलो. हाँ अभी आ रहा है आवाज. आर यू हियरिंग मी? यस यस. 2 मिनट. इफ यू गेटिंग माय वॉइस प्लीज मैसेज once so that I can confirm that you will hear me. Clear? Okay. We are going to study about the biotechnology. Biotechnology was one of the old field of the biology through which different fermentating process had been carried out. Preparation of curd from milk, preparation of different bakery product such as duff of bread, and fermentation through which antibiotic, enzyme, organic acid and different product had been obtained. ये ओल्डेस्ट फॉर्म है बायोटेक्नोलॉजी का. जैसे जैसा वक्त बदलता गया, बायोटेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई और आज बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की सबसे ज्यादा एडवांस फील्ड है, जिस फील्ड के थ्रू हम दो अनरिलेटेड ऑर्गेनिज्म का डीएनए एक दूसरे में कंबाइन कर बॉयर इन 1972. तो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे कि कैसे दो अनरिलेटेड स्पेसीज के डीएनए को हम कंबाइन कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद recombinant DNA technology, which is first initiated by Stanley Cohen and Herbert Boy. एक छोटा सा आपको पॉइंट याद दिला दूं
कि स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बॉयर ने दो रिलेटेड बैक्टीरिया में जीन ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यूज किया था। एक बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम, ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो टाइफाइड कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा है इस्चेरिचिया कोलाई। तो इन लोगों ने क्या किया, दोनों ने साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को निकाला, कट करके निकाला। डीएनए को कट करने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस उस एंजाइम का नाम है, हम अभी डिटेल में उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो साल्मोनेला टाइफाइम्यूरियम से जीन को कट करके जीन इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, जीन को कट करके निकाला और इस जीन को इंट्रोड्यूस किया होस्ट सेल में। अब होस्ट उस सेल को कहते हैं जिसके अंदर हम डीएनए को शिफ्ट करते हैं। वो होस्ट बैक्टीरिया भी हो सकता है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंजाई सेल, कोई भी अप्रोप्रिएट सेल जिसमें हम जीन को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। ओके, नाउ we are going to discuss about the steps in recombinant DNA technology. The first step in rDNA technology is isolation of DNA from donor organism. जिस ऑर्गेनिज्म से हम डीएनए को ऑब्टेन करेंगे उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाएगा डोनर, क्योंकि इसने अपना डीएनए दिया मतलब हमने उसको ऑब्टेन किया। अब डीएनए को ऑब्टेन करने के लिए, फॉर एग्जांपल आपके पास में प्लांट सेल है, प्लांट सेल इज बाउंडेड बाय सेल्यूलोजिक सेल वॉल, सेल्यूलोज एज वेल एज पेक्टिन। तो आपको पैरेनकाइमा सेल, क्योंकि पैरेनकाइमा सेल लिविंग होता है, इसके पास प्रोटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम और डीएनए भी प्रेजेंट है। आपको डीएनए का एक छोटा सा पीस चाहिए होता है। तो प्लांट सेल में जीन तक या डीएनए तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको आउटर मोस्ट सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। तो आप एक टेस्ट ट्यूब में सेल को डाल दीजिए और उसमें दो एंजाइम के ड्रॉप डालिए। एक ड्रॉप रहेगा आपका सेल्यूलेस जो सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करेगा, और दूसरा ड्रॉप रहेगा आपका पेक्टिनेज जो पेक्टिन को डिसॉल्व करेगा। इस तरह से प्लांट सेल वॉल कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। अब सेल वॉल डिसॉल्व होने के बाद बचेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन which is made up of lipid bilayer as well as protein. So by treating the plasma membrane with lipase and protease, the entire plasma membrane also get dissolved. Nucleus will remain. Nucleus is also covered by nuclear membrane, and the composition of every kind of membrane, either it is a membrane of organelle or it is a membrane of cytoplasm, having the same type of lipid bilayer and protein. So with the help of lipase as well as protease enzyme, nuclear membrane also get dissolved and you will get only chromosome. Now chromosome is made up of DNA as well as protein. Most abundant protein is histone protein. Already protease enzyme is working there, and with the help of protease, the protein of chromosome get dissolved and you get only a long coiled DNA molecule. Now this long and coiled DNA molecule which is left inside the test tube. Suppose this is test tube. This is the long and coiled DNA molecule. You will get it from the plant cell. Now this DNA is treated with chilled ethanol. Chilled ethanol make the coiling straighten. जितने भी coiling इस DNA में है, chilled ethanol उसको खोल देगा और आपको टेस्ट ट्यूब में straight DNA नजर आएगा. Straight means एकदम सीधा सीधा नहीं, बस उसकी coiling remove हो जाएगी like this. So difference is observed in this two DNA molecule. This is called as DNA with straightening, that is chilled ethanol treatment afterward. Now, अब इस डीएनए के ऊपर बहुत सारे जीन्स हैं, किसी की लेंथ छोटी है, किसी की लेंथ बड़ी है, बहुत सारे सेगमेंट हैं. सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड एज जीन. अब इन सब में से एक जीन आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जिसको आप अलग निकाल कर एक बैक्टीरिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं. उस जीन को कहा जाएगा जीन ऑफ इंटरेस्ट,
और डिजायर्ड जीन और एलियन पीस ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। अलग अलग नाम दिए जाते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट को। तो इसको इन सब के कनेक्शन से तोड़कर कैसे निकाला जाए, तो आपको यूज करना पड़ेगा डीएनए कटिंग एंजाइम। देखो डीएनए कटिंग एंजाइम, एंजाइम का मेन नाम है न्यूक्लियेज। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, the main name of the enzyme is nuclease। देखिए एंजाइम के नाम से पता चलता है कि उसकी एक्टिविटी क्या रहेगी। लाइपेज लिपिड को डिसॉल्व करेगा, प्रोटीएस प्रोटीन को डिसॉल्व करेगा, है ना, कार्बोहाइड्रेटेज कार्बोहाइड्रेट को डिसॉल्व करेगा। सेम इसी तरह से जो न्यूक्लियस है ये न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट करेगा। अब न्यूक्लियस की दो टाइप्स हैं। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ न्यूक्लियस, वन इज एंडोन्यूक्लियस एंड अदर इज एक्सोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस डीएनए के एंड से न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करता जाएगा, इसीलिए उसको नाम दिया गया एक्सो। इट रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम एंड ऑफ डीएनए। एंडोन्यूक्लियस कट द डीएनए अदर देन एंड। ऊपर का एंड छोड़ दीजिए, नीचे का एंड छोड़ दीजिए, एंड के अलावा बीच में से डीएनए को कट करने वाले एंजाइम को कहा जाएगा एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस की डिस्कवरी 1963 में हुई थी। तीन साइंटिस्ट लोग, आर्बर, स्मिथ और नेथन, ये एक मर्तबा ई कोलाई बैक्टीरिया को अपने माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व कर रहे थे कि इसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से चलता है। अचानक कोइंसिडेंटली हम कह सकते हैं कि इस बैक्टीरिया पर बैक्टीरियोफेज आकर के बैठ। द वायरस विच इन्फेक्ट द बैक्टीरिया इज कॉल्ड एज बैक्टीरियोफेज। अब इस वायरस ने अपना डीएनए बैक्टीरिया के सेल में पेनिट्रेट किया। तो अब वायरस के डीएनए का काम है अपने लिए रेप्लिकेशन परफॉर्म करना और अपने लिए प्रोटीन बनाना, बैक्टीरिया के सारे एंजाइम को यूज करते हुए। लेकिन वायरस ने अपना डिफेंस करते हुए इस वायरल डीएनए के ऊपर, बैक्टीरिया ने अपना डिफेंस करते हुए इस वायरल डीएनए के ऊपर एक एंजाइम को इंसिडेंट किया, मिथाइलेज। मिथाइलेज, मिथिल पे से नाम रखा गया। इस एंजाइम को मार्कर कहते हैं। ये डीएनए के ऊपर क्या किया, मिथिल ग्रुप अटैच करके मार्किंग कर दिया। अब दूसरा एंजाइम बैक्टीरिया ने अटैक किया इस फॉरेन डीएनए के ऊपर, एंजाइम का नाम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। जहां जहां मिथाइलेज ने मिथिल ग्रुप की मार्किंग किया था, इस एंजाइम ने मिथिल ग्रुप की मार्किंग पे डीएनए को कट करते चले गया। वायरल डीएनए के कई सारे पीसेस हो गए। अब वो डीएनए इनएक्टिव हो गया तो उसने अपना रेप्लिकेशन भी परफॉर्म नहीं कर पाया और ना ही अपने लिए प्रोटीन सिंथेसाइज कर पाया। तो यहाँ पे आर्बर, स्मिथ और नेथन ने ये कहा कि दिस सेकंड एंजाइम, दूसरे वाला जो एंजाइम है, इसने वायरल डीएनए के सिंथेसिस को रोक दिया। रोकने को कहते हैं रेस्ट्रिक्शन। तो इस सेकंड एंजाइम का नाम रखा गया रेस्ट्रिक्शन। और क्योंकि इसने डीएनए को अदर देन एंड, बीच में से कट किया, तो इसको कंप्लीट नाम दे दिया गया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो बाय द एक्टिविटी ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, वेरियस फ्रेगमेंट्स आर सेपरेटेड इन द टेस्ट ट्यूब। बहुत सारे सेगमेंट एक दूसरे से सेपरेट हो गए। अब सबकी लेंथ अलग अलग है, कोई बहुत लंबा है, कोई बहुत छोटा है। इन सारे सेगमेंट को कहते हैं RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने लेंथ जनरेट किया, फ्रेगमेंट की, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब अलग अलग लेंथ। अब इन सारे सेगमेंट को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर सेपरेट किया जाएगा। यू नो दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ ट्रे लाइक इंस्ट्रूमेंट। इस इंस्ट्रूमेंट पे दो टर्मिनल्स हम यूज करते हैं, कैथोड एंड एनोड, दैट इज नेगेटिव पोटेंशियल एंड पॉजिटिव पोटेंशियल।
इस ट्रे लाइक इंस्ट्रूमेंट पर हम यूनिफॉर्म जेल स्प्रेड कर देंगे, अगारोस जेल। अगारोस is a natural polysaccharide obtained from the seaweed. Seaweed generally rhodophyceae के members को कहते हैं red algae, because red algae are growing deep in the ocean. Some are also growing on the superficial surfaces. So two members of the red algae, Gracilaria and Galidium, are used to obtain the agarose powder. उस अगारोस का एक जेल बनाया जाएगा। अच्छा, अगारोस का ही क्यों, जेल तो दूसरे भी होते हैं, पॉलीएक्रिलामाइड जेल है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ जेल है। अगारोस जेल डीएनए सेगमेंट को सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है, मतलब सेगमेंट अपने लेंथ के अकॉर्डिंगली रन होगा और एक बारीक से स्टॉपर आएगा, जैसा रोड पर ब्रेकर होते हैं उस तरीके से, और डीएनए अपने लेंथ के अकॉर्डिंग उस डिस्टेंस। अब देखिए, जितना छोटा सेगमेंट है डीएनए का, उसमें न्यूक्लियोटाइड की संख्या उतनी कम रहेगी, मॉलिक्यूलर वेट भी कम रहेगा, तो इसको तेजी से भागने में आसानी रहेगी क्योंकि उसका वजन कम है, मॉलिक्यूलर वेट कम है। स्मॉलर सेगमेंट दूर तक भागेगा और जो लार्ज सेगमेंट रहेगा वो नजदीक ही रुक जाएगा, वो ज्यादा देर तक नहीं भाग सकता। तो आप निगेटिव पोटेंशियल की तरफ वेल्स करेंगे। ये डीएनए सेगमेंट जो टेस्ट ट्यूब में है, निगेटिव चार्ज है, इनको पोअर कर दीजिए वेल्स में और इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कर देना। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करोगे तो निगेटिव पोटेंशियल निगेटिवली चार्ज डीएनए सेगमेंट को रिपेल करेगा। एट द सेम टाइम पॉजिटिव पोटेंशियल अट्रैक्ट द डीएनए सेगमेंट टुवर्ड इटसेल्फ। सो रनिंग ऑफ डीएनए सेगमेंट ऑकर ऑन द सरफेस ऑफ agarose gel in such a way that small segment run farther, farther मतलब दूर तक, run farther from the negative potential, and likewise longer segment will closer to the negative potential. In this way DNA segment gets separate. सेपरेशन के बाद आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा है, ये कैसा पता लगाएंगे? उससे भी 2 कदम पीछे एक बात आपको बताऊं कि डीएनए सेगमेंट जो होते हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं, इनको सेपरेट होते हुए हम डायरेक्टली देख नहीं सकते। पहले इसके ऊपर इथिडियम ब्रोमाइड का सॉल्यूशन स्प्रेड करना पड़ेगा, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ट्रे को रखना पड़ेगा, तब ये डीएनए सेगमेंट ब्राइट ऑरेंज कलर के चमकना शुरू हो जाते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के डेटाबेस के अकॉर्डिंगली, ये 2 टेक्निक याद रखिएगा, ऑटो रेडियोग्राफी एंड डेटाबेस फ्रॉम द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो इन 2 रेफरेंस के थ्रू आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट कौन सा, ये आप डिटरमाइन कर सकते हैं। उस जीन को यहां से एक्सट्रैक्ट कर लीजिए और एक टेस्ट ट्यूब के अंदर प्यूरिफाइड फॉर्म में रख दीजिए। ये टेस्ट ट्यूब है मान लें, और ये है आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अब दूसरी तरफ आपको इससे कनेक्ट करना है उस डीएनए से जो होस्ट में आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर जाएगा। तो वो जो सेकंड डीएनए है जो ट्रेवलिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे उसे कहा जाएगा वेक्टर। वेक्टर इज आल्सो डीएनए मॉलिक्यूल which is used to carry the gene of interest in the host cell. अब देखिए, वेक्टर में बहुत अलग अलग टाइप्स आती हैं। एक टाइप है प्लाज्मिड, एक टाइप है कॉस्मिड, एक टाइप है फेजमिड और एक टाइप है बैक्टीरियोफेज। तो हम इन 4 में से 2 टर्मिनल को स्टडी करते हैं। प्लाज्मिड is a circular DNA which is found in the some prokaryotic cell freely in the cytoplasm, and it has its own origin of replication. Origin of replication का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है डीएनए को डुप्लीकेट करने में, डीएनए की क्लोनिंग बनाने में। ये आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है, लेकिन आप इस डीएनए को यानी जीन ऑफ इंटरेस्ट को ऐसे डीएनए के साथ लिंक करें जिसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हो, तो वो अपना भी रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगा और साथ ही साथ जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी रेप्लिकेशन परफॉर्म करेगा। तो मल्टीपल कॉपीज आपको मिलेगी विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड दे आर कॉल्ड एज क्लोन। तो 2 टर्मिनल वेक्टर्स, प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड नेकेड डीएनए freely found in the cytoplasm. Sorry, फोन फॉल डाउन हो गया, just a second.
Okay. Okay. Are you hearing me? Okay. So plasmid, अब plasmid भी दो टाइप्स के हैं, नेचुरल प्लाज्मिड एंड आर्टिफिशियल प्लाज्मिड। नेचुरल प्लाज्मिड फॉर एग्जांपल टीआई प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियन में जो पाया जाता है। उस प्लाज्मिड की आपको प्रॉपर्टी पता है कि दैट प्लाज्मिड कंटेन टीडीएनए and it is naturally entering in the cortical cell of the dicotyledonous root so that it can cause the crown gall disease, that is tumor. So it is also called as natural genetic engineering. Agrobacterium tumefaciens is also called as natural genetic engineer. Another kind is synthetic plasmid, artificial plasmid, the plasmid which are made in the laboratory. First artificial plasmid used in recombinant DNA technology is BR322, first artificial plasmid. Second artificial plasmid is PUC. इसका नॉमेनक्लेचर है आर्टिफिशियल प्लाज्मिड के लिए सिर्फ, नेचुरल प्लाज्मिड के लिए कोई नॉमेनक्लेचर रूल नहीं है। नॉमेनक्लेचर में जो स्मॉल पी रहेगा फर्स्ट अल्फाबेट, दिस रिप्रेजेंट द प्लाज्मिड। उसके बाद दो जो अल्फाबेट्स रहेंगे ये कैपिटल रहेंगे। ये दो लेटर या तो रिसर्चर का नाम रिप्रेजेंट करेंगे या प्लेस जहां प्लाज्मिड बनाया गया उसको रिप्रेजेंट करेंगे। यहां पर पीबीआर में पी फॉर प्लाज्मिड, बी आर रिसर्चर के नेम में बोलीवर एंड रोड्रिग्स। दूसरा प्लाज्मिड एक होता है पीयूसी, स्मॉल पी कैपिटल यू कैपिटल सी, यूएनसी मींस यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। ओके, तो दिस प्लाज्मिड इज यूज्ड एज अ वेक्टर। अब इस दूसरे टर्मिनल ले लेते हैं बैक्टीरियोफेज। अगर आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट की लेंथ बहुत ज्यादा है तो पीबीआर 322 या कोई भी प्लाज्मिड लॉन्ग जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने के लिए इनसफिशिएंट होता है। लॉन्ग जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा बैक्टीरियोफेज, which is also artificially synthesized in the laboratory. Okay. PBR 322 से पहले हम एक मर्तबा रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखिए, नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नाम रखने का मेथड, नाम रखने का तरीका। नॉमेनक्लेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इसमें कुछ रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। मैं एक एक करके यहां पे आपको बता दूं। रूल नंबर 1, एंजाइम के नाम में जो फर्स्ट अल्फाबेट रहेगा या फर्स्ट लेटर रहेगा वो कैपिटल होना चाहिए। रूल नंबर 1, फर्स्ट लेटर और अल्फाबेट शुड बी कैपिटल, and this first capital alphabet represent the name of genus of bacteria, बैक्टीरिया के जीनस का नाम, जिस बैक्टीरिया में से एंजाइम को ऑब्टेन किया गया उस बैक्टीरिया का जीनस का फर्स्ट कैपिटल लेटर। रूल नंबर 2, अब यहां पे देखिए दो लेटर एक साथ हैं, सेकंड एंड थर्ड। ये दोनों सेकंड और थर्ड लेटर स्मॉल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट किए जाएंगे, एंड दिस टू स्मॉल अल्फाबेट आफ्टर फर्स्ट रिप्रेजेंट द नेम ऑफ स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया फ्रॉम विच रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हैज बीन ऑब्टेन्ड। रूल नंबर नेक्स्ट, फोर्थ लेटर, फोर्थ पोजीशन। ये थोड़ा सा कंफ्यूज करता है आप लोगों को, तो मैं आपको बता दूं कि फोर्थ पोजीशन पे जो लेटर आएगा वो कंपलसरी नहीं है, वो प्रेजेंट भी हो सकता है, अब्सेंट भी हो सकता है। कुछ एग्जांपल में हम अभी देख लेंगे। फोर्थ पोजीशन पर अगर कोई लेटर प्रेजेंट है तो वो कैपिटल भी हो सकता है और स्मॉल लेटर भी हो सकता है, सी फॉर कैपिटल, एस फॉर स्मॉल। अगर फोर्थ पोजीशन पर कोई लेटर प्रेजेंट है, चाहे वो कैपिटल हो या स्मॉल हो, वो स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करेगा, स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। स्ट्रेन का मतलब होता है टाइप। जैसा प्लांट में स्पेसीज के नीचे जो कैटेगरी आती है उसको आप कहते हैं वेराइटी। एग्जांपल, मैंजीफेरा इंडिका इज अ बायोलॉजिकल नेम और बॉटनिकल नेम ऑफ द मैंगो। लेकिन मैंगो में कई सारी वेराइटी है ना, देसी मैंगो है, दशहरी मैंगो है, एल्फिंसो मैंगो है।
50 and hundreds of the variety. So here, in case of bacteria, variety is known as strain. Okay, जैसा E. coli, उसमें 2-3 स्ट्रेन है, मतलब 2-3 वेराइटी है. बैसिलस अमाइलोलिक्विफिकेन, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी, ये बैक्टीरिया है. हर बैक्टीरिया में अपनी अपनी बहुत सारी वेराइटी होती हैं जिन्हें स्ट्रेन कहते हैं. ओके, ये फोर्थ लेटर एब्सेंट भी हो सकता है. लास्ट रूल नंबर 5, फिफ्थ पोजीशन के ऊपर जो लेटर रहेगा ये रोमन नंबर रहेगा. रोमन नंबर कैपिटल 1, कैपिटल 2, कैपिटल 3, and that number represent the order of discovery. Order मतलब सीक्वेंस के पहले नंबर पे डिस्कवर किया गया एंजाइम उस बैक्टीरिया में से सेकंड नंबर पे डिस्कवर किया गया उसी में से थर्ड नंबर पे, इस तरह. तो चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं. एंजाइम का नाम है EcoR1. ये बहुत कॉमन एंजाइम है, कॉमनली यूज्ड रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फॉर कटिंग ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल. इसमें फर्स्ट कैपिटल ई जो है ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, इस्चर्चिया. ओके, फिर सेकंड और थर्ड नंबर पे 2 स्मॉल लेटर है, ये दोनों मिलके स्पेसीज को रिप्रेजेंट करेंगे, कोलाई. मींस एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम इस्चर्चिया कोलाई. अब देखिए फोर्थ पोजीशन के ऊपर लेटर है, वो भी कैपिटल आर. ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है. इस्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया है, उसके स्ट्रेन का नाम है RY13. तो RY13 का सिर्फ क्या लिया गया, आर. एंड फिफ्थ लास्ट, दिस इज नॉट कैपिटल आई, इट इज रोमन नंबर 1, कैपिटल 1, एंड इट रिप्रेजेंट द ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी. इट इज फर्स्ट डिस्कवर्ड एंजाइम फ्रॉम ई कोलाई. दुनिया में पहली मर्तबा डिस्कवर होने वाला नहीं, ई कोलाई में से पहली बार डिस्कवर होने वाला एंजाइम. इसी तरह एक और एग्जांपल ले लीजिए, HIND थर्ड. H फॉर हीमोफाइलस, जीनस का नाम है. IN फॉर इन्फ्लुएंजा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया. अब देखिए फोर्थ पोजीशन पर लेटर है लेकिन स्मॉल लेटर है, रिप्रेजेंट करेगा स्ट्रेन को, और स्ट्रेन इसका है RD का सिर्फ D लिया गया. और रोमन नंबर 3 मतलब हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया में से तीसरे नंबर पे एंजाइम को डिस्कवर किया गया. तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के नॉमेनक्लेचर के रूल हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि सर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को जब हम अप्लाई करते हैं डीएनए के ऊपर तो ये डीएनए को कहां पे, कौन सी पोजीशन पे कट करता है. तो स्टूडेंट्स इसके अलग अलग नेचर हैं हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के. एक कॉमन नेचर जो आपके सिलेबस में आप पढ़ते हैं वो है पहली एंड्रोमिक डीएनए, है ना. देखिए डीएनए का नेचर आप जानते हैं कि डीएनए इज डबल स्टैंडर्ड एंड बोथ स्टैंड्स आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर. वन स्टैंड इज रनिंग 3' to 5', अदर इज रनिंग 5' to 3'. तो एक स्टैंड के ऊपर फॉरवर्डेड डायरेक्शन में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, दूसरे स्टैंड पर बैकवर्डेड साइड में सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड अगर सेम रीडिंग, सेम प्रोनाउंसिएशन को शो करे तो उसे कहते हैं पहली एंड्रोमिक डीएनए. तो कई ऐसे एंजाइम है जैसे EcoR1, ये डीएनए को पहली एंड्रोमिक साइट पे कट करेगा, और EcoR1 की एक स्पेसिफिक पहली एंड्रोमिक साइट है. पहली एंड्रोमिक अलग अलग टाइप्स के हैं. EcoR1 का पहली एंड्रोमिक साइट आप याद रखें GAATTC. ये एक स्टैंड पर 5' to 3', अपोजिट स्टैंड पर GAATTC. तो आप देखें कि रीडिंग जो है वो फॉरवर्डेड और बैकवर्ड में सेम है, इसे कहते हैं पहली एंड्रोमिक. अब इतना समय अपने पास में भी नहीं है क्योंकि दूसरा भी आपका लेक्चर है, देशमुख मैडम का लेक्चर है शायद से, इसलिए अपन और इसको एलैबोरेट नहीं कर सकते हैं. वरना मेरी ऐसी इच्छा थी कि आपको पूरा डिटेल में कंसेप्चुअल ये टॉपिक में एक्सप्लेन करूं. तो ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिलेगा तो अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी. ओके, हाँ एक मैं इस क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ. हाँ
क्यों रे बेटा टेस्ट वगैरह क्यों दे रहे हैं? अच्छा अच्छा ठीक है ना, अभी 2 टेस्ट वगैरह पढ़ाई करो। जो भी बेटा डाउट डिफिकल्टी अभी आखिरी टाइम है अपना, समझो 15 दिन बाकी है, तो वो सब अपने क्लियर करा करके पेपर दो। सेंटर अच्छा है कार्ड आई नहीं शायद अभी, है ना? Hello. Hello. Hello everyone. And very good afternoon to one and all. So we are witnessing our guest lecture series, alumni guest lecture series, which this department is organizing since last 3-4 years. ऑनलाइन हाँ Online अपने lecture series. कौन से चैप्टर का? नहीं नहीं, Imran. क्वेश्चन पेपर तुमको कौन सा चाहिए? Imran sir. हार्ड कॉपी का सॉफ्ट कॉपी? हाँ तो तुमको सेंड कर देता ना। Sayyid Imran और sir. खुदा वाला Can करे you तो hear me? Imran sir. ये हाँ नहीं करूँ? अरे यार मोबाइल गिर गया तुम्हारा, सॉरी मोबाइल गिर गया था तुम्हारा। Imran sir. अरे एक मिनट He is शिरवन interacting with someone. Yes, he is interacting with his students, I think. Imran sir. Imran sir, can you hear me? हाँ मैडम हेलो यस मैम Hear me. Just a minute, sir. Wait for a यस minute. मैम Okay, sir is addressing to meeting. Yes, sir. ओके हाँ. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. यस सर। एक मिनट थोड़ा सा अंतर फोन करो. So hello everyone. So we are witnessing the online guest lecture series delivered by our alumni. And the first lecture is just over, and it was delivered by Dr. Syed Imran, who is alumni of this department. Now, why we are organizing this lecture series is has a specific motto. That first is that we want that our student must have to interact with our alumni so that they can know where the former student of this department are placed or what they are doing. Okay, and they can follow them. So this is one of them, and they can also acquire knowledge which is having with our alumni. So this is the basic motto. I just want to introduce our first resource person, Dr. Syed Imran. He has done his MSc from this department in 2007, I think, and also he has worked as a research fellow in a major research project from 2009 to 2012, and then he has pursued his PhD from this department, same department, and awarded PhD in I think 2016. And now he is working as director of a bioscience academy, which is basically a coaching academy for NEET and all other competitive examinations. So uh, at once I welcome you, Imran, and also thank you for delivering such a nice talk for my students, for our students rather. Okay. Now, madam, over to you. So, good afternoon, everyone. So, Good afternoon, ma'am. so Good Afternoon, ma'am. okay. Good So, afternoon, ma'am. we welcome Dr. Syed Imran, who is alumni of this department. On behalf of the department, I welcome him. And just now, Deepak coaches sir told about him. And we are organized the motive, the objective of the organizing this guest lecture series to acquire the knowledge as well as to know about the alumni of this department. Yes, ma'am. यस मतलब ये हमको दिखाना है कि आपको नए नए टॉपिक्स भी हमको सिखाना है एंड विद दैट हमको हमारे डिपार्टमेंट के जो अलुमनाई हैं जो पहले यहाँ से पढ़ के गए हैं वो अभी क्या क्या कर रहे हैं कहाँ पर है और उनका नॉलेज जो है वो हमको आपके तक आप लोगों के तक पहुंचाना था. दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस guest lecture series, and we are running this guest lecture series of alumni student from last 3 years, and today we have the 3 alumni of our department. Just now you have listened the guest lecture of Dr. Syed Imran sir. Then we are also having next lecture of Dr. Pranjali Deshmukh, who is working
at Varud College. Dr. Koche will introduce him in detail, as well as Dr. Nitin Khandare sir, who is working as assistant professor at Dharni College. So we are very happy to have such a alumni who is contributing their academic knowledge to the department and the students, and they are pursuing their own Sayyid Imran is entrepreneur of our department who has established his own academy and running it successfully from I think last 9 years, isn't it, Sayyid Imran sir? Yes, madam. Yes, ma'am. You have completed Last 9 year. 9 years. Yes, I'm not wrong. So, congratulations, Imran sir, Thank for you, ma'am. the successful running of your biological academy. So, thank you, Syed Imran. Thank you, मैम Pranjali. एक बात मैं सब स्टूडेंट को यहाँ कहना चाहूंगा Yes, कि yes. देखिए आप अभी ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं तो सब लोग अपने जो टीचर्स हैं उनके गाइडेंस को पूरा पूरा फॉलो करें। आज हम लोग भी जहाँ जिस पोजीशन पर भी हैं तो हमारे टीचर्स की वजह से हैं। आपको कोचेस सर है, कोकाटे मैडम, इतने एक्टिव टीचर्स हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनके फेस पे उनकी तारीफ कर रहा हूँ, मैं पीछे भी हमेशा मेरी बैच में उनका नाम लेता हूँ। तो आप बहुत खुशनसीब लोग हैं। उनके गाइडेंस को अगर आपने अच्छे से फॉलो कर लिया ना तो आप हमेशा सक्सेस ही सक्सेस होते जाओगे। Yes, बस sir. इतना ही मैसेज मैं आपको कहना चाहूंगा। और कोई भी अगर फीडबैक हो, आपको समझा है, पढ़ाया हुआ नहीं समझा, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। He is in contact with us. If you have any difficulty and you want any other topic from him, so he is always ready to deliver it for you people, and that is his academic contribution to our department. आप लोगों को जो भी दिक्कत होगी कुछ समझने में या और कुछ, तो you can contact us and you can discuss your problems with us. Okay. So thank you, Sayyid Imran. नो मैडम, थैंक यू, दिस इज माय अपॉर्चुनिटी। Okay, थैंक्स। okay. Do visit to department also. थैंक यू मैडम, जस्ट वेलकम। Over to you, Okay. Professor. Okay, ma'am. Thank you. Now we are going to start our next lecture, which is going to deliver by Dr. Pranjali Deshmukh, madam. Dr. Deshmukh, ma'am, is working as assistant professor in Mahatma Phule Arts and Commerce and Sitaramji Chaudhary Science College, Varud, since last 4 years. And she is also the proud alumni of this department. She has completed her post graduation and also PhD from this department. She has done her PhD for under the supervision of late Dr. D.G. Bharange sir, and she has also has published several research papers, and now working as assistant professor at the Mahatma Phule College, Varud. And I think today's her topic of presentation is chromosomal aberrations, specifically for all students. So, madam, over to you. Welcome, ma'am. Ma'am, you can start your lecture. Yes, sir. सर मैं पीपीटी रन करता है. Okay. हाँ एक
प्रांजली, गुड आफ्टरनून स्टुडंट. हा मॅम, माझा आवाज येतोय? आय एम ऑडिबल? हो हो, येस येस. हा. So today we will see the chromosomal aberration. So we know that the chromosome. What is the chromosome? आपल्याला सर्वांना माहिती आहे. हमको सबको पता है कि chromosome means what? Chromosome क्या है? It is the thread-like structure which is present in the nucleus. हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है और उस न्यूक्लियस में जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहते हैं उसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं. तो क्रोमोसोम के ऊपर यानी जो हमारा डीएनए है, हमें पता है कि डीएनए से हम बने हैं, बॉडी हमारी बनी है. तो जो डीएनए रहता है उसमें जो क्रोमोसोम है वो जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाइंड कर किया हुआ रहता है. जैसे अगर हमने वूल का अगर वूल देखा, हमने लोकर म्हणतो आपण त्याला, है ना, लोकरचं बंडल, वूल का अगर बंडल लिया तो कैसे रहता है कि वह जैसे ही वैसे ही डीएनए हमारा जो क्रोमोसोम है वैसे डीएनए उसमें बाइंड रहता है. सो डीएनए प्लस प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम कहाँ पे रहता है कि हमारे न्यूक्लियस में, और हमारा न्यूक्लियस कहाँ रहता है? सेल में. बट क्रोमोसोम हैज एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर. क्रोमोसोम जो है वो एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर रहता है हमारा, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो ज़्यादातर चेंज नहीं होता. लेकिन क्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स क्या है कि जैसे क्रोमोसोमल एबरेशन, सम चेंज ऑकर इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज क्रोमोसोम एबरेशन. तो जब हमें पता है कि क्रोमोसोम में कभी चेंजेस नहीं होते, लेकिन ड्यू टू सम स्पॉन्टेनियस और नेचुरल, स्पॉन्टेनियस मीन्स नेचुरल, जब सेल डिविजन होता है हमें कब दिखाई देता है? हॅलो प्रांजली, हा, तुझे हा. हे नाही दिसत आहे, पीपीटी हो ना, पीपीटी नाही दिसत आहे. दिसत नाहीये. मॅम मी फॉरवर्ड केली आहे. मॅम पीपीटी माझ्यापर्यंत पोहोचलेली नाही अजून. आली नाही? तुम्ही सेंड व्हॉट्सअप केलाय का? हो सर, व्हॉट्सअप केली आहे. नाही अजून तर नाही आलं. हा सर, आली आहे. नाही, ओके ओके. ती पीपीटी असेल ना तर त्यांना थोडं समजायला सोपं जाईल हो ना. नाही, पीपीटी तयारच केली आहे मी, पण काहीतरी हे झालंय. नाही. नाही नाही नाही, हे चुकीचं आलंय मग सर, 1 मिनिट. ओके. वेट, एक 5 मिनिट वेट करू आपण, मी पीपीटी सेंड करते. ओके. व्हॉट्सअप करू मग आपण करतो म्हणतो. हा सर, तुम्हाला पीपीटी सेंड केली आहे. मंगेश सर, मॅम पीपीटी नाही आली म्हटलं अजून. मोठी असेल का? यायला पाहिजे, मोठी असेल. मॅम पाठवलं का तुम्ही?
प्रांजली, त्यांना ते शेअर करायला इश्यू चाललाय मला वाटतं. पण आपल्याला पाठवली तर मग जमेल नाही का? हो तेच पाठवा मग म्हणून तू येत पण सांगितलंय नसेल ना, त्याचं हे हो जास्त मॅम, असतं. तुम्हाला पाठवते आहे मी. सर आली पीपीटी? नाही जातच नाही. नाही पीपीटी नाही आली. तुला तसं प्रेझेंट करता येईल का? हा सर, हे असं दिसतंय. त्याला फुल स्केप कर. प्रेझेंटेशन मोड मध्ये टाक त्याला. ओके ठीक आहे, बघ कर. थोडं राईटला घे त्याला. बरोबर. ओके. हे हो या सर, यातून सर एका नंबर देतील त्याच्यावर पाठवून टाका. मॅडम राहू द्या, तुम्ही तसंच करा. तसंच चालेल करा चालेल. कारण लेट होत आहे त्याच्यात. अजून नंतरचं आहे ना करू. आणि लेट होईल. देशमुख मॅडम तसंच करा तसंच तू. करतो चालेल present. चालेल सर चालेल. हाँ, chromosomal aberration. So, the chromosomal aberration means some changes occur in the आवाज येतोय ना मॅम? हो येतोय, आवाज येतोय. हाँ, chromosomal chromosomal aberration means the chromosomal abnormality. So, some change occur in the structure means the morphology of chromosome and the number of chromosome. It is called as chromosomal aberration. जर जेव्हा आणि हा चेंज जो है जो चेंज होता है वो बिकॉज ऑफ सम स्पॉन्टेनियस चेंज हो सकता है और कभी कभी यानी नेचुरली जब सेल डिवीजन होता है तब,
और कभी कभी बिकॉज ऑफ सम रेडिएशन, सम एक्सट्रीम हीट, सम एक्सट्रीम कोल्ड और बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स, तो उससे हमें इस पे सेल डिवीजन होने के वक्त चेंज होता है. सो क्रोमोसोमल एबरेशन इज ऑफ टू टाइप्स, structural chromosomal aberration and numerical chromosomal aberration. So structural chromosome aberration means any change in any organism, change in structure or morphological character is called as structural aberration. Structural aberration और दूसरा है numerical aberration. So numerical aberration means the change in the number of chromosome. हमें पता है कि ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो उससे अगर एक क्रोमोसोम कम आ जाए यानी 44 या 45 या 47 ऐसे अगर क्रोमोसोम में चेंज होता है तो उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल एबरेशन. So structural aberration is of two types, that is the intrastructural intrachromosomal aberration and interchromosomal aberration. So intrachromosomal aberration means कि चेंज इन ओनली वन क्रोमोसोम. जब चेंज एक ही क्रोमोसोम में, सिंगल क्रोमोसोम में रहता है, ऑकर होता है, तो उसको बोलते हैं इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशन. तो चेंज यानी हमें पता है कि क्रोमोसोम पे क्या प्रेजेंट रहते हैं, जीन्स प्रेजेंट रहते हैं. जीन्स मीन्स क्या है, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. जो न्यूक्लियोटाइड रहते हैं थायमीन, साइटोसिन, एडेनाइन, वो उसको बोलते हैं हम न्यूक्लियोटाइड. तो सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड मीन्स जीन. तो उसमें अगर एक ही क्रोमोसोम के अंदर चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशन. और सेकेंड टाइप है इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन. तो इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स द चेंज बिटवीन टू क्रोमोसोम. जब दो क्रोमोसोम के बीच में चेंजेस होंगे तो उसको बोलते हैं इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन. तो जो इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशन है उसमें तीन टाइप है, डिलीशन, डुप्लीकेशन एंड इन्वर्शन. एंड इंट्राक्रोमोसोमल एबरेशन है उसमें एक टाइप है ट्रांसलोकेशन. तो फर्स्ट टाइप स्ट्रक्चर एबरेशन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोम के तीन टाइप है. फर्स्ट टाइप देखेंगे हम डिलीशन. तो डिलीशन मीन्स व्हाट, डिलीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज डिफिशियंसी. जैसे हम मोबाइल में डाटा डिलीट करते हैं वैसे क्रोमोसोम में कुछ सीक्वेंस यानी कुछ सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम आर डिलीटेड. कुछ पार्ट अगर सम डिलीट हो गया ड्यू टू द रेडिएशन और स्पॉन्टेनियस चेंज और केमिकल ट्रीटमेंट इन अ सेल डिवीजन, ये सब कहाँ होगा, क्रोमोसोमल एबरेशन कहाँ होगा, सेल डिवीजन में. तो सेल डिवीजन में अगर एक हाथ सम छोटा पार्ट यानी लॉस ऑफ सम सेगमेंट ऑफ द क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज डिलीशन. तो अगर क्रोमोसोम का यहाँ पे दिख रहा है कि ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ये जो एक ए फिगर है इसमें दिख रहा है कि ये है नॉर्मल क्रोमोसोम. क्रोमोसोम ऑलवेज इन पेयरिंग में रहते हैं. तो जो डिलीट हुआ पार्ट है अगर उसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं है तो वो नेक्स्ट सेल डिवीजन में यानी डेड हो जाता है, वो फंक्शनल नहीं रहता. और जो क्रोमोसोम का पार्ट सेंट्रोमियर कंसिस्ट करता है, सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहता है उसमें, तो उसको बोलते हैं वो फंक्शनल होता है. वो अपना जो रॉ एंड है वो हील कर लेता है और नेक्स्ट सेल डिवीजन में परफॉर्म करता है. तो जो डिलीशन है यानी डिलीट ऑफ सम सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम और डिलीट ऑफ सम पार्ट ऑफ क्रोमोसोम, इट इज कॉल्ड एज डिलीशन. डिलीशन इज ऑफ टू टाइप्स. डिलीशन जो है वो दो टाइप्स के रहते हैं, एक रहता है टर्मिनल डिलीशन और दूसरा है इंटरकैलरी डिलीशन. टर्मिनल डिलीशन मीन्स क्या है, तो हमें पता है अब डिलीशन मीन्स कि छोटा सा पार्ट डिलीट हो जाना. तो लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट, जो टर्मिनल एंड होगा, ये जो टर्मिनल एंड रहता है उसका जो पार्ट अगर टर्मिनल एंड का पार्ट अगर डिलीट हो गया तो उसको बोलते हैं टर्मिनल एंड. यानी जो एंड का पार्ट है वो डिलीट हो गया या वो लॉस्ट हो गया तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन. और सेकेंड टाइप है इंटरकैलरी डिलीशन. अब टर्मिनल डिलीशन में एक ही सिंगल ब्रेक ऑकर होगा और उससे अपना जो एंड पॉइंट है एंड जो है वो डिलीट होगा, वो लॉस्ट होगा, तो उसको बोलते हैं टर्मिनल डिलीशन. सेकेंड है इंटरकैलरी डिलीशन. तो इंटरकैलरी मीन्स लॉस ऑफ इंटरकैलरी सेगमेंट विथ ए टू ब्रेक इन क्रोमोसोम. जब क्रोमोसोम में टू ब्रेक ऑकर होते हैं और छोटा सा मिडल पार्ट
दो ब्रेक के बीच का पार्ट जो है मिडल पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। तो ये डिलीशन है और डिलीशन की वजह से क्या होता है कि मेल स्टेरिलिटी ऑकर होती है। जो पार्ट डिलीट हो जाता है, अगर सेल डिवीजन में कुछ पार्ट डिलीट हो गया तो उसमें से कुछ वो उस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, मेल स्टेरिलिटी आ जाती है। तो नेक्स्ट है ड्यूप्लीकेशन। सेकेंड पार्ट ऑफ क्रोमोसोमल एबरेशन, स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल एबरेशन इज ड्यूप्लीकेशन। यानी कुछ कौन सा भी पार्ट, सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम कंटेनिंग सेवरल जीन। हमें पता है कि एक आध क्रोमोसोम जो है उसमें बहुत सारे जीन्स प्रेजेंट रहते हैं एंड दिस जीन गेट ड्यूप्लीकेटेड। वो जो जीन है वो जब अगर डबल हो जाए बिकॉज ऑफ सम रेडिएशन इन सेल डिवीजन में वो अगर पार्ट ड्यूप्लीकेट हो जाए, अगर डबल डोज में आ जाए तो उसको बोलते हैं ड्यूप्लीकेशन। तो ड्यूप्लीकेशन इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 टाइप्स के ड्यूप्लीकेशन है। एक है टैंडम ड्यूप्लीकेशन, दूसरा है रिवर्स ड्यूप्लीकेशन और तीसरा है डिस्प्लेस ड्यूप्लीकेशन। तो जो टैंडम ड्यूप्लीकेशन है, तो अगर जो डबल किए गए पार्ट जो जीन्स जो है वो डुप्लीकेट अगर हो गए तो उसी मैनर में डुप्लीकेट हो जाते हैं। जैसे देखो ये है डिलीशन, ये है डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन में क्या, जो पार्ट है वो डबल हो गया। ये नॉर्मल नॉर्मल क्रोमोसोम है और ये पार्ट जो है वो डबल हो गया और वो सीक्वेंस में है। अगर ये ए बी है तो वो सीक्वेंस में ए बी आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं सीक्वेंशियल डुप्लीकेशन और उसको बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। और दूसरा है रिवर्स डुप्लीकेशन। सपोज एक मैं आपको देखो डुप्लीकेशन, सपोज दिस इज द क्रोमोसोम, ये क्रोमोसोम है और ये जो है ए बी सी, ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, ए बी सी डी ई एफ जी, ये जो है वो जीन रहेंगे, इसको बोलते हैं जीन ऑफ क्रोमोसोम। तो यहाँ पे अगर डुप्लीकेशन में ये क्रोमोसोम नंबर जो है वो डबल हो गए, जैसे डबल ए बी सी डी ई, तो ये डबल हो गए। तो ये डबल होने के बाद अगर नेक्स्ट ही आ जाते हैं, वो सीक्वेंस में आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सीक्वेंशियल डुप्लीकेशन। जैसे ये डिलीशन है, तो डिलीशन में नॉर्मल क्रोमोसोम ये है और उसमें का एफ जो है वो डिलीट हो गया तो उसको बोलते हैं डिलीशन। और डुप्लीकेशन जो है 3 टाइप के हैं। टैंडम डुप्लीकेशन, वो सीक्वेंस में डुप्लीकेट हो रहे हैं लेकिन सीक्वेंस में प्रेजेंट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। वो रिवर्स कंडीशन में अगर डुप्लीकेट हो गया, अगर बी डबल हो गया लेकिन बी ए के पहले अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं रिवर्स। वो रिवर्स कंडीशन में अगर लोकेट हो रहे हैं क्रोमोसोम में तो उसको बोलते हैं रिवर्स डुप्लीकेशन। और डिस्प्लेस, वो डबल होके कहीं भी कौन से भी प्लेस पे प्रेजेंट हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन 3 टाइप्स के हैं, टैंडम डुप्लीकेशन, रिवर्स डुप्लीकेशन एंड डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। तो डुप्लीकेशन मीन्स कि जो क्रोमोसोम है वो डबल हो रहे हैं, यानी डुप्लीकेट हो रहे हैं। 1 या 2 जीन वो है, जैसे ए बी है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं, वो सीक्वेंस में अगर आएंगे तो सीक्वेंस में जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट रहेंगे तो उसको टैंडम डुप्लीकेशन कहा जाता है। वो रिवर्स मैनर में अगर प्रेजेंट हो रहे हैं, लोकेट हो रहे हैं तो उसको रिवर्स डुप्लीकेशन कहा जाता है। और डिस्प्लेस डुप्लीकेशन मीन्स वो कहीं पे भी प्लेस हो रहे हैं, क्रोमोसोम में कहीं पे भी प्लेस हो रहे हैं तो उसको डिस्प्लेस डुप्लीकेशन बोलते हैं। थर्ड टाइप है इन्वर्शन। तो इन्वर्शन मीन्स दिस some part of chromosome get inverted at 180 degree Celsius। तो 180 डिग्री में अगर वो सेल्सियस नहीं, 180 डिग्री में अगर वो इन्वर्ट हो रहा है, ये यहाँ पे डायग्राम दिख रही है। तो डायग्राम में दिख रहा है कि 180 डिग्री पे जो क्रोमोसोम पार्ट है वो सेगमेंट जो है वो क्या हो रहा है, इन्वर्ट हो रहा है, क्रोमोसोम इन्वर्ट हो रहा है ड्यू टू सम आर्टिफिशियल चेंज, ड्यू टू सम रेडिएशन। तो उसमें अगर जो इन्वर्टेड पार्ट होता है वो डिलीट हो जाता है, ये जो इन्वर्टेड दिख रहा है सी एंड डी वो डिलीट हो जाता है और बाकी का जो क्रोमोसोम है वो जो रॉ एंड रहते हैं वो हील अप कर लेते हैं खुद में। तो इन्वर्शन
यानी द सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम गेट इन्वर्टेड एंड एट 180 डिग्री। तो इन्वर्शन जो टाइप है वो फर्स्ट टाइम मेज में दिखा था इन बाय मैकलिनटॉक। मैकलिनटॉक नाम के जो साइंटिस्ट है उन्होंने पहले रिपोर्ट किया था कि मेज में इन्वर्शन दिख रहा है। देन द इन्वर्शन इज ऑफ टू टाइप्स, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। तो पैरासेंट्रिक इन्वर्शन जो है उसमें क्या रहता है कि जो इन्वर्टेड पोर्शन रहता है, इन्वर्टेड पोर्शन नॉट कंटेन द सेंट्रोमियर। जो क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर है वो सेंट्रोमियर का पोर्शन इन्वर्टेड ना होना तो उसको बोलते हैं पैरासेंट्रिक। देन पेरीसेंट्रिक यानी इन्वर्टेड सेगमेंट कंटेन द सेंट्रोमियर। जो इन्वर्टेड सेगमेंट है उसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट रहना उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। नेक्स्ट है इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन। इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन मीन्स द changes occur in the between two chromosome, it is called as interchromosomal aberration। तो इंटरक्रोमोसोमल एबरेशन का एक टाइप है ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन इज अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोप्लॉइडी। यूप्लॉइडी मीन्स व्हाट? यू मीन्स द यू वर्ड इज यानी यू वर्ड जो है ये दिख रहा है यूप्लॉइडी। तो यू मीन्स ट्रू। ये जो है यूप्लॉइडी ये ग्रीक वर्ड से आया है। यू मीन्स ट्रू और कंप्लीट, प्लॉइडी मीन्स सेट और यूनिट। सो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, चेंज इन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज कॉल्ड एज यूप्लॉइडी। और यहाँ पे यानी कंप्लीट सेट क्रोमोसोम का बैलेंस है तो उसको यूप्लॉइडी कहा जाता है। और एन यूप्लॉइडी यानी absent, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इज एब्सेंट इट इज कॉल्ड एज अनयूप्लॉइडी। अनयूप्लॉइडी दो टाइप के हैं, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी में दो टाइप है, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। देन हाइपोप्लॉइडी में मोनोसोमी एंड नलीसोमी। फर्स्ट हम देखेंगे अनयूप्लॉइडी। सो चेंज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम बट नॉट इन कंप्लीट सेट। सिर्फ क्रोमोसोम के नंबर में चेंज हो रहा है लेकिन पूरे के पूरे सेट जो है उसमें चेंज नहीं हो रहा। पूरे के पूरे सेट में चेंज नहीं होता है, एक ही क्रोमोसोम में चेंज हो रहा है तो उसको बोलते हैं अनयूप्लॉइडी। तो अनयूप्लॉइडी में दो टाइप्स है, हाइपरप्लॉइडी और हाइपोप्लॉइडी। तो फर्स्ट हम देखेंगे हाइपरप्लॉइडी। हाइपरप्लॉइडी मीन्स क्या है कि क्रोमोसोम गेन होना, the gain of chromosome, gain of number of chromosome, it is called as hyperploidy। Hyperploidy is two types, that is trisomy and tetrasomy। So trisomy means क्या है कि जो ऑर्गेनिज्म है जैसे ह्यूमन में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें एक क्रोमोसोम गेन होना, एडिशन होना, एडिशन ऑफ वन क्रोमोसोम यानी उसमें 46 के 47 होना तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। तो ट्राइसोमी दो टाइप्स की भी रहती है, डबल सिंपल ट्राइसोमिक यानी एक ही क्रोमोसोम डबल होता है यानी 2n यानी डिप्लॉइड है ना। डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में चेंज होना तो यानी उसको बोलते हैं न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन। तो डिप्लॉइड सेट प्लस वन single chromosome it is called as simple trisomy। then diploid chromosome plus 1 यानी एक पेयर में 1 और दूसरे पेयर में 1 ऐड होना तो उसको बोलते हैं डबल ट्राइसोमिक। यानी एक पेयर डबल नहीं होती है, सिर्फ सिंगल क्रोमोसोम। अगर डबल क्रोमोसोम है तो सिंगल क्रोमोसोम में यहाँ पे क्या हो जाता है, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि दिस इज द डिप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोम हमेशा पेयरिंग में प्रेजेंट रहते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं ट्राइसोमी। यानी थर्ड एक एक पेयर जो है वो ये ट्राइसोमी। जो हमें पता है कि बाइवैलेंट रहते हैं तो यहाँ पे ट्राइवैलेंट हो गया। एक सेट जो है पेयर है क्रोमोसोम की उसमें एक एडिशन हो गई है, इसमें और एक एडिशन होना यानी डबल ट्राइसोमी। और नेक्स्ट है हाइपरप्लॉइडी का सेकेंड टाइप है टेट्रासोमी यानी एडिशन ऑफ 2 क्रोमोसोम और 1 पेयर, एक पूरी की पूरी पेयर ऐड होना, डिप्लॉइड सेट में ऐड होना उसको बोलते हैं टेट्रासोमी। सिंपल टेट्रासोमी मीन्स कि एक ही पेयर ऐड होना
और डबल टेट्रासोमी मीन्स कि एक ज़्यादा से ज़्यादा पेयर ऐड होना। एक से ज़्यादा पेयर जब ऐड होती है तो उसको डबल टेट्रासोमी कहा जाता है। देन हैप्लोप्लॉइडी, जो न्यूमेरिकल अन्यूप्लॉइडी जो है उसका सेकेंड टाइप है हैप्लोप्लॉइडी। यानी हैप्लोप्लॉइडी मीन्स लॉस ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम, एक या एक से ज़्यादा क्रोमोसोम का लॉस होना एक डिप्लॉइड सेट से। यानी एक जो स्पेसिफिक नंबर है ह्यूमन में, जैसे 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से एक लॉस होना कि वह एक से ज़्यादा लॉस होना, उसको बोलते हैं हाइपोप्लॉइडी। तो हाइपोप्लॉइडी इज टू टाइप्स, दैट इज मोनोसोमी एंड नलीसोमी। मोनोसोमी मीन्स कि लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम फ्रॉम ए सिंगल पेयर, एक पेयर से एक ही क्रोमोसोम लॉस होना, उसको बोलते हैं मोनोसोमी। मोनोसोमी इज डिनोटेड बाय 2n, 2n यानी डिप्लॉइड -1, 2n -1। और उसमें डबल मोनोसोमी भी होती है, जैसे डिप्लॉइड में से एक पेयर में से एक क्रोमोसोम डिलीट होना और दूसरे पेयर में से एक क्रोमोसोम डिलीट होना, तो उसको बोलते हैं डबल मोनोसोमी। और सिंगल मोनोसोमी मीन्स एक ही पेयर का एक ही क्रोमोसोम डिलीट होना। नेक्स्ट है नलीसोमी, यानी यहाँ पे पूरी की पूरी पेयर जो है वो लॉस्ट हो जाती है। वो क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है या लॉस्ट हो जाती है पूरी पेयर। यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 पेयर है, तो 23 पेयर में के 22 पेयर प्रेजेंट रहना और एक पेयर जो है वो डिलीट होना। यानी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, उसमें से 44 नंबर प्रेजेंट रहना और 2 क्रोमोसोम लॉस्ट होना, एक पेयर लॉस्ट होना, उसको बोलते हैं नलीसोमी। देन यहाँ पे दिख रहा है कि नॉर्मल डिप्लॉइड 2n, जैसे एग्जाम्पल है AABBCC। तो मोनोसोमी मीन्स AABB और C, यानी सिंगल क्रोमोसोम लॉस्ट होना। नलीसोमी मीन्स एक पूरी की पूरी पेयर लॉस्ट होना। और पॉलीसोमी यानी कि कितने भी पेयर लॉस्ट हो सकते हैं। ट्राइसोमी मीन्स कि जैसे AA है, BB और CC और एक C यानी ऐड होना, एक जीन ऐड होना, उसको बोलते हैं ट्राइसोमी। डबल ट्राइसोमी मीन्स कि एक और पेयर में एक सिंगल क्रोमोसोम ऐड होना। देन टेट्रासोमी मीन्स कि पूरी की पूरी पेयर जो है वो ऐड होना, उसको बोलते हैं टेट्रासोमी। नेक्स्ट है यूप्लॉइडी। तो ये कंडीशन, यूप्लॉइडी मीन्स ए कंडीशन इन विच वन और मोर फुल सेट ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट। यानी यू मीन्स ट्रू और कंप्लीट सेट और प्लॉइडी मीन्स यूनिट। तो कंप्लीट सेट अगर डबल हो रहा है, लेकिन वो कैसे होता है? वो बैलेंस होता है, उसमें कोई भी जो डिसीज है वो डिसीज ऑकर नहीं होता। लेकिन जो अनयूप्लॉइडी है या यूप्लॉइडी है, उससे क्या हो जाता है? क्रोमोसोम की जो बैलेंस है, सेट बैलेंस है, वो बैलेंस नहीं रहता, वो अनबैलेंस हो जाता है। उसकी वजह से क्राइड्यू सिंड्रोम या डाउन सिंड्रोम, यानी कैंसरियस स्पीसीज ग्रो हो जाती है और सब जो बैलेंस रहता है वैसे वो सेट बैलेंस नहीं रहता। तो यूप्लॉइडी में टाइप्स है मोनोप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी। मोनोप्लॉइडी मीन्स सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, यानी हमें पता है कि वेजिटेटिव सेल में और सोमेटिक सेल में 2 सेट रहते हैं, क्रोमोसोम के 2 सेट प्रेजेंट रहते हैं। तो उसमें और गमीट में सिंगल सेट क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। तो पूरे के पूरे प्लांट बॉडी में एक ही सेट प्रेजेंट हो, यानी सिंगल बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम इज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिज्म, इट इज कॉल्ड एज मोनोप्लॉइडी। यानी एक ही सेट क्रोमोसोम का एक ही सेट प्रेजेंट हो तो उसको मोनोप्लॉइडी कहा जाता है। डिप्लॉइडी यानी 2 सेट, ट्रिप्लॉइडी यानी 3 सेट, 3 सेम सेट, 4 टेट्राप्लॉइड मीन्स 4 सेट। वैसे ही more than 2 set chromosome is present in an organism, it is called as polyploidy. Polyploidy और मोनोप्लॉइडी, इसके वजह से क्या हो जाता है कि जो इनफर्टिलिटी होती है, देन मेल स्टेरिलिटी आती है, यानी कुछ ना कुछ डिसीज जो है वो ऑकर होते हैं। तो पॉलीप्लॉइडी इज ऑफ 2 टाइप्स, ऑटोपॉलीप्लॉइड और ऑलोपॉलीप्लॉइड। पॉलीप्लॉइड
यानी पॉलीप्लॉइड्स विच ओरिजिनेट बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ द क्रोमोसोम ऑफ ए सिंगल स्पीसीज। एक ही सिंगल स्पीसीज की क्रोमोसोम की सिंगल स्पीसीज डुप्लीकेट हो जाए तो उसको बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी, डबल हो जाए तो उसको बोलते हैं ऑटोपॉलीप्लॉइड। तो ऑटोपॉलीप्लॉइड जो है, जैसे ऑटोपॉलीप्लॉइड जो है उसमें पॉलीप्लॉइडी रहती है, यानी मेनी स्पीसी मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट रहता है। तो ये जैसे क्रोमोसोम विदाउट फर्टिलाइज, कुछ फ्रूट जो है वो विदाउट फर्टिलाइज प्रेजेंट हो जाता है और डेवलप हो जाता है, तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। जैसे सीडलेस बनाना है, सीडलेस एप्पल है, सीडलेस ग्रेप्स है, सीडलेस वाटरमेलन है। तो ये जो पॉलीप्लॉइड्स है, तो पॉलीप्लॉइड्स ऑर्गेनिज्म मोस्टली शोज इन द प्लांट्स, बट जो एनिमल्स रहते हैं उसमें ज़्यादातर पॉलीप्लॉइडी हमें दिखाई नहीं देती। फिर नेक्स्ट है कि ऑलोपॉलीप्लॉइडी। तो ऑलोपॉलीप्लॉइडी मीन्स क्या है कि सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं, लेकिन polyploids which originate by the combining complete chromosomal set from two or more species। यानी ऑटोपॉलीप्लॉइडी में सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम एक ही स्पीसीज का प्रेजेंट रहता है, यानी मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम रहता है लेकिन एक ही स्पीसीज का रहता है, तो उसको ऑटोपॉलीप्लॉइडी कहते हैं। और ऑलोपॉलीप्लॉइडी मीन्स की मोर सेट, एक से ज्यादा सेट, जैसे रैफेनो ब्रासिका, यानी रैफेनस मीन्स मूली और ब्रासिका मीन्स राई। तो दो अलग अलग स्पीसीज के क्रोमोसोम को कंबाइन करके मल्टीपल किए जाते हैं, तो उसको ऑलोपॉलीप्लॉइड्स कहा जाता है। और जैसे एग्जांपल, जैसे रैफेनोब्रासिका और टोमेटो प्लस पोटैटो यानी पोमैटो, तो वैसे दो स्पीसीज के क्रोमोसोम मल्टीपल सेट में प्रेजेंट अगर हुए तो उसमें न्यू वेराइटी आ जाती है और इससे इवोल्यूशन फॉर्म होता है। तो ये है पॉलीप्लॉइड्स। तो पॉलीप्लॉइड्स मोस्टली व्हीट, कॉटन, स्ट्रॉबेरीज, बनानाज में दिखाई देते हैं, ब्लॉसम फ्लावर में दिखाई देते हैं। और ये जो क्रोमोसोमल एबरेशन जो है वो क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ सम रेडिएशन, बिकॉज ऑफ सम केमिकल्स, बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रीम हीट और एक्सट्रीम कोल्ड की वजह से होते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल एबरेशन क्यों हो जाती है? बिकॉज ऑफ द नॉन डिसजंक्शन, कि एक आध सेट ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट न होना और उससे सेपरेट न होते हुए नेक्स्ट सेल डिवीजन में वो वैसे ही जाना, उसको बोलते हैं नॉन डिसजंक्शन। तो बिकॉज ऑफ नॉन डिसजंक्शन क्रोमोसोमल एबरेशन ऑकर होता है, डेवलप होता है। तो ये कुछ डायग्राम्स है क्रोमोसोमल एबरेशन के। डिप्लॉइड सेट क्रोमोसोम है तो उसमें टेट्राप्लॉइडी दिख रही है, अन्यूप्लॉइडी में ट्राइसोमी दिख रही है, मोनोसोमी दिख रही है, ट्रिप्लॉइडी और टेट्राप्लॉइडी। यानी डिप्लॉइड में बाइवेलेंट क्रोमोसोम रहते हैं, एक पेयर रहती है। ट्राइसोमी एक पेयर, यानी एक ही पेयर में एक क्रोमोसोम ऐड हो जाता है, और मोनोसोमी में डिलीट हो जाता है। ट्रिप्लॉइड में 3 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं और टेट्राप्लॉइड में 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम रहते हैं। तो उसमें बिकॉज ऑफ न्यूमेरिकल एन्यूप्लॉइडी की वजह से ये पैटियू सिंड्रोम होता है। जैसे उसमें पुअरली डेवलप आईज रहते हैं, एक्स्ट्रा फिंगर्स और टोज रहते हैं, वीक मसल टोन रहते हैं, ईयर्स, स्मॉल ईयर्स रहते हैं, उसको बोलते हैं पैटाउ सिंड्रोम। और वो जब ट्राइसोमी 13 नंबर की क्रोमोसोम पेयर पे प्रेजेंट होती है, डबल ट्रिपल हो जाएंगे वो 13 नंबर पे, उसको वहाँ पे पैटाउ सिंड्रोम हो जाता है। देन एडवर्ड सिंड्रोम, जब ट्राइसोमी 18 नंबर की क्रोमोसोम पे होती है तो उसमें उसको एडवर्ड सिंड्रोम कहा जाता है। तो उसमें भी मसल डिसऑर्डर होते हैं, मल्टीपल जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर होते हैं बर्थ के टाइम, तो उसमें सिंड्रोम्स डेवलप हो जाते हैं। तो दिस इज द क्रोमोसोमल एबरेशन। सो थँक यू मॅम, सर, तुम्ही मला ही अपॉर्च्युनिटी दिली त्याबद्दल। हां सर, आवाज येतोय ना माझा? हो, येतोय। थैंक यू मैडम, वेल डिलीवर। थोड़ा सा पीपीटी शेयरिंग से इशू आला, बट यू हैड
came over the problem and overcome the problem, and were done well. Students, if you have any question, you can ask. Hello. Yes, sir. ओके. कुणाला काही प्रश्न असतील क्रोमोझोमल ॲबरेशन्सच्या संदर्भात मॅडमला विचारायचं असेल त्यांनी विचारा प्लीज. नाही. Ma'am, why? Ma'am, hello. Yes, yes. Okay. Amir, One wants question to is there from ask Amir some- Khan Pathan. Okay. Amir, Yes, sir. you want to ask something? Yes, sir. Yes, ma'am. Why chromosomal aberrations are occur? बिकॉज ऑफ सम रेडिएशन. जसं आपण पाहिलं होतं की हिरोशिमा आणि नागासाकीमध्ये रेडिएशन अणुबॉम्ब फेकल्यामुळे तिथे काय झालं होतं की त्यांच्या क्रोमोझोम मध्ये चेंज होत आहे. अजूनही जी जनरेशन येत आहे ती पण क्रोमोझोम चेंज होत आहे. तर बिकॉज जेव्हा जास्त कोल्ड असेल, एक्स्ट्रीम कोल्ड असेल, एक्स्ट्रीम हीट असेल किंवा काही केमिकल ट्रीटमेंट असेल, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट असू शकते किंवा कुठल्या रेडिएशन्समुळे होत आहेत. बघा, तुम्ही बघत असाल की जिथे आपण एक्सरे काढायला जातो तिथे लिहिलेलं असते की प्रेग्नेंट वुमन आर प्रोहिबिटेड. त्यांना ही काढायला चालत नाही कारण की त्यामध्ये एक रेज असतात. त्या रेजमुळे काय होते की सेल डिव्हिजनच्या वेळी जी न्यू जनरेशन असते त्यामध्ये काहीतरी चेंजेस घडून येतात. तर काही काही जी सेल डिव्हिजनच्या वेळी स्पॉन्टेनियसली पण चेंज घडून येतात आणि काही काही रेडिएशनमुळे होतात, केमिकल ट्रीटमेंटमुळे होतात जसं कोल्चिसिन. काही काही एक्स्ट्रीम हीट असेल किंवा एक्स्ट्रीम कोल्ड असेल त्यामुळेही क्रोमोझोमल ॲबरेशन घडून येतं. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you, Dr. Pranjali. Thank you, sir. Thank you for delivering a nice talk for our students. Okay. Now we are going to start our third lecture. Khandare sir. जॉईन झाले आहेत का सर? प्रांजली मॅम. हां सर. हां मॅम. व्हेरी गुड. थँक्यू मॅम. गुड डिलिव्हरी. थँक्यू. खरंच छान डिलिव्हरी केलं. अजून चांगलं झालं. हो मॅम, थोडंसं इथे नेटवर्क प्रॉब्लेम आला. म्हणजे कॉलेजच्या नेटवर्कमध्ये प्रॉब्लेम आला होता म्हणून मग मी मोबाईलवरून दिलं. जोपर्यंत इम्रान सरांचं होतं तेव्हा नेटवर्क व्यवस्थित होतं आणि जेव्हा माझं वेळ आली होती तेव्हा मग काहीतरी प्रॉब्लेम झाला. ओके ओके. मध्ये असे प्रॉब्लेम येत असतात. हे आपण त्याला टेक्निकल इश्यू वर्षात खूप हो. पाहिलेलं आहे. हां. त्याला टेक्निकल इश्यू म्हणायचं ना. हो, टेक्निकल इश्यू आला. पण त्यावर आपण मात केली आणि पीपीटी पण दिसली सर्वांना, त्यामुळे होऊन गेलं. सर जॉईन झाले आहेत का सर? खंडारे सर. मॅम करतोय, जॉईन करतात. थँक्यू मॅम. मला आणि कोचे सर थँक्यू, मला तुम्ही ही अपॉर्च्युनिटी दिली सर्वांसमोर प्रेझेंट व्हायची. थँक्यू सो मच. अरे तुम्ही सगळे आमच्या ह्या डिपार्टमेंटचे काय अल्युमिनाई आहे, त्या डिपार्टमेंटचे स्टुडंट आहे ना. मग आमच्या म्हणजे अल्युमिनाई कडनं जर आमच्या स्टुडंटसाठी काय करता आलं तर ते आमच्यासाठी म्हणजे एक ऍक्टिव्हिटी आम्ही तशी राबवतोय. आणि दुसरं कसं की यामुळे दोघांना एक्सपोजर भेटतो. एक काहीतरी क्वेश्चन पण आलाय. हो, क्वेश्चन आलाय चॅट बॉक्स मध्ये, एका मुलीने विचारलाय. बायोटिक्स आहे ना. बघितलं का तू? सांगू का मॅम? ॲज यू सेड दॅट क्रोमोझोमल ॲबरेशन्स ऑकर ड्यू टू सम radiation. So will the future scientists be able to overcome this problem? So cure after someone is defected by this. हां, म्हणजे आता क्रोमोझोमल ॲबरेशन हे रेडिएशनमुळे होते, पण आपण नेहमी रेडिएशनमध्ये प्रेझेंट नसतो ना. जेव्हा आपण सपोज टिश्यू कल्चर करतो आहे तेव्हा आपण UV लाईट यूज करतो. पण UV लाईट केव्हा यूज करतो आपण? की जेव्हा कुणीही
कुठलाही ऑर्गॅनिझम त्या लॅबमध्ये नसेल तेव्हा आपण 20 मिनिट तो UV रेज चालू ठेवतो आणि त्यामुळे मग त्यानंतरच आपण ती UV लाईट बंद केल्यानंतरच आपण एंट्री करतो. म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये कुठला चेंज घडून येत नाही. तर असंच जर सपोज कुठल्याही सायंटिस्टनी जर रेडिएशन जेव्हा यूज करताना कुठलाही ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट नसेल तेव्हा तर ते ओव्हरकम करू शकतात. सायंटिस्ट ते तो जो क्रोमोझोमल ॲब्रेव्हेशन जे रेडिएशनमुळे होईल तर तिथे ते करू शकतात की जिथे ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट नाही अशा ठिकाणी जर एक्सपेरिमेंट केला किंवा एखाद्या रूममध्ये एक्सपेरिमेंट केला पण बाकी मग सेफली करत असेल तर तेव्हा ते होऊ शकतं. पण जर एखादा अणुबॉम्ब टाकला असेल तर तिथे आपण करू शकत नाही आणि सायंटिस्ट किंवा आता हिरोशिमा नागासाकीमध्ये जसं अणुबॉम्ब टाकल्यामुळे रेडिएशन्समुळे झालेलं होतं ना तर तिथे आपण चेंज घडवून आणू शकत नाही. पण जसं आता युक्रेन आणि इथे रूस आणि युक्रेनमध्ये जी युद्ध चालू आहे तिथे जर अणुबॉम्ब त्यांनी ते सायंटिस्ट लोकच तिथे फॉर्म करत आहेत ना डेव्हलप करत आहेत ते तर ते जर चांगल्या कामासाठी त्यांनी जर डेव्हलप केला तर ते आपल्यासाठी चांगलं आहे. म्हणजे कॉइन्स हॅज टू साईड. जर आपण हार्मफुल इफेक्ट जर त्याचे पाहिले तर त्यामुळे तर हार्मफुल होणारच आहे किंवा जर पॉझिटिव्ह जर आपण घेतलं की चांगल्या कामासाठी जर रेडिएशन यूज करत असेल तर चांगली गोष्ट आहे. तर सायंटिस्टनी जर चांगल्या कामासाठी केली तर ते ओव्हरकम करू शकतात. Okay. Thank you, ma'am. Okay, Rutuja More. Someone. My question is that today we can even perform heart transplant surgery. So we can perform chromosomal transplants to cure the patient. क्रोमोझोमल ट्रान्सप्लांट वेगळा आहे आणि क्रोमोझोमल ॲबरेशन वेगळा आहे. क्रोमोझोमल ॲबरेशन मीन्स ॲबनॉर्मलिटी आणि ही ॲबनॉर्मलिटी सेल डिव्हिजनच्या वेळी एखाद्या वेळेस नॅचरली होऊ शकते आणि काही केमिकल्समुळे होऊ शकते. तर क्रोमोझोमल ट्रान्सप्लांट वेगळं ती आपण यूज करू शकतो. आपली टेक्नॉलॉजी खूप पुढे गेलेली आहे. ट्रान्सप्लांटेशन असं होत नाही बेटा. ऍक्च्युली जे आपण जीन थेरपी यूज करतो ना अख्खा क्रोमोझोम आपण नाही हे करू शकत. एकाचा क्रोमोझोम जर दुसऱ्या याच्यात टाकला तर त्याला प्रोबॅबली इट मे रिक्वायर सम मोर प्रिसाइज कंडिशन आणि ते आपण तेवढ्या नाही प्रोव्हाइड करू शकत. जीन थेरपीमध्ये आपण एखाद जीन रिप्लेस करून आपल्याला करता येतं. ओके. आता काही सोमॅटिक डिसऑर्डर्स असतात ते इट इज ड्यू टू जसं मॅडमनी मागाशी सांगितलं की बा अशा पद्धतीचे सोमॅटिक डिसऑर्डर्स असतात. त्यातलं एखादं जर आपल्याला सुरुवातीला म्हणजे लाईफच्या सुरुवातीला जर तुमच्याकडे असेल आहे तर त्या पद्धतीने तो पर्टिक्युलर जीन रिप्लेस करून आपल्याला करता येऊ शकतं. त्याला जीन थेरपी म्हणतात. ओके. So thank you students for your keen interest. Now we are going to start our third lecture and the lecture is going to be delivered by Dr. Nitin Khandare sir. Okay. Dr. Khandare sir is also one of our alumni and he is currently working as an assistant professor and head Shri Vashantrao Naik Mahavidyalaya Dharni. He has completed his PhD from this department under the able guidance of Dr. D.G. Bharange sir, and now working as an assistant professor. He has also published several papers, and his work is basically in the field of phytochemistry. And today he is going to deliver a lecture on root morphology and modifications, I think. Correct. So I welcome you, sir. And now it's over to you. You can start your presentation. Okay, thank you very much, sir. Okay. Can I start, sir, my presentation? You can share your slide and start your lecture, please. Okay, okay.
वर कोण आहे बेटा? वर लॅब मध्ये कोण आहे? त्यांना एकदा बोलवता का? कोचिंग सरांनी बोलवलं. ठीक आहे. Okay. Am I audible, sir? Yes, yes, you are audible. Okay, thank you very much, sir. Uh, First of all, I am very much thankful to uh, respected Professor Dr. Kokate Madam, Professor and head of this event, of this event, and the organize such events on this online platform, the online guest lecture. I am very much thankful to ma'am. Then Dr. Koche sir, also professor from the same department, and uh, and welcome you all dear students on this online platform. So today we are on this online platform, the online guest lecture series, and my topic is the morphology and modifications of roots. So let's start, sir. So, okay, madam, uh, am I audible clearly? Yes, yes. Okay, thank you very much, sir. So the नितीन सर morphology. तुमचा मोबाईल लँडस्केप मध्ये ठेवा बरं. मोबाईल मध्ये येत आहे का प्रेझेंटेशन? एक मिनिट सर, आता येतोय सर? नाही, एकदा ट्राय करून बघा. लँडस्केप. 1 minute सर. ओके, ठीक आहे. पीपीटी मध्ये आहे का? हो सर. पीपीटी आहे की पीडीएफ आहे? पीपीटी आहे सर. ओके, ठीक आहे. यू कॅन. Okay, sir. So the morphology modification of roots, the it is characteristics or the main characteristics of root. The root is the descending or underground parts of the plant or the plant axis, and root is usually positively geographic. That means which is growing downwards in the soil in searching of the water, or is called as a positively hydrotrophic, which is continuously growing toward in searching of the source of soil water. But it is a negatively phototrophic, which is growing, that's why which is growing away from the sunlight. Fruit is usually cylindrical or non-grain, but some exceptions are there. Example like the trapa and the uh, Tenophyllums. These are these few exemptions in which the roots are green also. Root does not bear nodes, internodes, leaves, or the buds like the stems. But few exceptions are also in the of the sweet potato and the wood apples. The growing point of root tip is subterminal and protected by a cap-like structure which is known as a root cap, which is generally situated at the apex of the root. Unicellular root hairs presents just behind the root cap, and which is increase the absorptive surface area of the roots. And the root hairs, which are whitish in color, they absorb the or these root hairs are absorb the soil water. Lateral roots are endogenous, that is, origin arise from the pericycle or main roots. That means these are arising on the lateral sides of the roots. Some rootless plants are also these many plants growing in aquatic habitats. That means they are already growing in a water body and which do not possess roots because there is a little requirements for the absorption of water and minerals as well as the salts. Example as the Volpia and the Hydrillas also. Here, one of the plants, Hydrilla, here the which is green in and which is having the very little amount of roots, or these are also called as also the rootless plants also because they these plants do not require the roots
as they are already present in the water body. Then the different types of the roots on the basis of their origins, roots are of two types. The first one is a taproot system or the taproot system, and another one, second one is the adventitious. These are the two main types of the roots. The first one, the taproots, the on the germination of seeds, the radical elongates into primary roots or the true roots, and these are nothing but the taproots. Simply, a root system whenever if a seed is sowing in a soil, first of all, this seed get absorb the soil water or moisture along with the minerals present in the soil water. After absorption of sufficient amount of water, the seed coat get ruptured, and one of the primordial organ is comes out from the seeds and which is growing inside the soil, which is nothing but the radicals. And when root system is developed from that radical, such types of root system is known as the taproot system. In dicot plants, the taproot system persists and produces the lateral roots such as the secondary roots and the tertiary roots. All lateral roots arise in acropetal succession. Acropetal succession means at the apex of the roots, the younger are at the apex and the older at the base of the roots. Such types of succession is called as the acropetal succession. Second one is the second types of the root system. It is the adventitious types of root system. These are the roots that grow from any parts of the plants other than radicals. Generally, the root system is arising from the radical and we say called as a taproot system. But in some plants, the root system is developed other than radical. Such types of root system is known as the adventitious root system. The first types of root system, taproot system, it is a characteristic feature of dicotyledonous plants, and second one is the adventitious root system, which is a characteristic feature of monocotyledonous plants. The taproot system is a short-lived and soon replaced by this adventitious root system in case of monocotyledonous plants. A group of adventitious roots and their branches constitutes adventitious root system. On the basis of their origin, the adventitious roots are of the following three types: the fibrous root system, the foliar roots, and the true adventitious roots. So, the first, fibrous roots. These are the clusters of equally prominent thread-like roots that develop either from the base of the stems. That means these are the thread-like. The so many threads are arising from the base of the stems, and these are nothing but the fibrous. Example, the rice, which are found in the rice plants, wheat, maize, onion, particularly in the monocotyledonous plant, or from the nodes of horizontal stems, example like the various grasses and the wood sorrel, etc. Second one, types of the adventitious roots is the foliar roots. Foliars means the leaf, foliage means the leaves, and in some plants, these roots arise from the base of the petioles. Example like the name of mention here, the rubber plants and the pogo stamens, or the veins of the leaf due to some injury. This can also be induced by the application of some hormones in artificial conditions. Some foliar birds can produce foliar roots. Example like the bryophyllum plants and the begonia. These are the examples of these plants where the foliar roots are developed. The third one is the true adventitious roots. These roots arise from the nodes and internodes of the stems. Example like the prop roots of banyan. The banyan means the ficus plants, the Ficus bengalensis, plants having a very religious importance in our country. The second one is the steel roots of the sugarcane, which are also arising from the some of the lower nodes of the stem of this sugarcane plant.
Third one is the climbing roots of the money plants. These are the some common familiar plants which are we all know about these plants. And the roots from stem cutting. These are the true adventitious roots. So on the basis of their origin, these adventitious roots are either the fibrous foliars or the true adventitious types of the roots. Then the root structure. The root structure or their typical root can be differentiated into five regions from apex to the base of the stems. Because at the base, from the base of the stem, there is a the roots are arise, and these roots are continuously growing toward inside the soils in a positively geotrophic manner in searching of the soil. So the different five regions of the roots, these are mentioned here. The first one is the root cap, which is present at the root apex. This root cap, it is a cap-like structure, and which is protective in nature, and the which is growing at the root tip in the screw pine plants. Multiple root caps are present, while in some aquatic plants, the example like the Pistia, Icornia, lemna, the root pockets are present instead of root caps. Generally, where in case of taproots or the dicotyledonous plants, there is a one root cap is present at the apex of the root tip. But some plants like the screw pine, these plants having the multiple root caps present. So what is the function of these root caps, or these also called as a calyptra? The function of the root cap is to protect the root meristem. Meristem means which the meristematic tissue which are present just behind this root cap, and the meristematic tissue is having capacity to divide and redivide or to multiple in and to elongate or to increase the length of root. Second one is to secrete mucilage that help tender roots to penetrate the hard soil. These roots or these root tip secrete some mucilage, or simply it secretes some chemicals that weather the rock, and they help in perception of gravity according to Charles Darwin. And these root packets function as a balance. Second, second region of the root is the growing or the meristematic zone. Here, the diagram showing the root and their different zones. The here at the root apex there is a presence of the root. This one is the root cap which is present at the apex of the root, which is protected the behind region which is known as the meristematic region or the meristematic zone. The second is the growing point or the meristematic zone which is present just behind this root cap. Here, this just behind the root cap, there is a region or the zone which is known as the meristematic zone. It is about 0.25 to 1 mm long and lies just behind the root cap and thus subterminal in position. That means at the terminal position there is a root cap, and below behind this terminal position or behind this root cap there is a meristematic zone. Its shape is like an inverted concave dome of cells, and the central rarely dividing cells are called quiescent center. Root meristems add cell to root cap and the basal region of the root. So this is the location of this meristematic zone. Third zone of the root is the zone of elongation. Here, behind this meristematic zone, there is a zone of or the region of elongation. The cells will get elongated and increases the size or length of the root, which is present just
behind the region of meristematic zone. The zone of elongation, it is about 1 to 10 mm in long and lies just behind the meristematic zone. As the name implies, it is a site of rapid and extensive cell elongation. This zone increases the length of root, and the external cells can absorb water and minerals from the soil. The fourth zone or the region, it is a root hair zone or the zone of differentiation. It is about 1 to 6 centimeter long. This one is a root hair zone, and this one is the root hair zones, and which having the numerous whitish root hairs which are present on the lateral sides of these main roots. It is about 1 to 6 centimeter in long, and it is the zone where the cell differentiate to form epiblema, cortex, endodermis, pericycle, and diploid. Many cells of epiblema elongate to form unicellular root hairs, and these root hairs, in case of roots, only and only the root hairs performing a function to absorb the soil water. As the root grows, new root hairs develops and older ones shrivels and slug off. The function of root hairs increase the absorptive surface area of the root. And the last zone of the root is the zone of the maturation. This one is the zone of maturation or the basal parts of the root, which is known as the zone of maturation. It constitutes a major portion of the roots, and the cells attain maturity when they reach this zone. And the function of this maturation zone is the lateral roots may emerge from pericycle, radical, differentiation of tissue, and causes secondary growth in the dicotyledonous plants. So these are the various different zones of the root and which are present, like the root cap, the growing zones, the meristematic zones, zone of elongation, root hair zones, or they are called as a the zone of differentiation. The last one is a zone of maturation. So these are the different 5 regions or zones of the roots. Then, what are the actual function of the roots in the plants? Root performs 2 kinds of the functions, primary and secondary. The primary functions are performed by all kinds of the roots, and they are structurally adapted to perform these functions. The secondary functions are specialized one and are performed only by those roots which are modified accordingly. The primary functions of the roots, the main functions, primary function is to encourage or fixing the plant body firmly to the soil so that they are not easily uprooted. That means the primary function is the plants get fixed at a particular substratum or encourage or fixing the plant body. Second one function, primary function, is the absorption and translocation of water and minerals from the soil to the aerial parts of the plant. Because the roots absorb the soil water along with the minerals present in the soil, and these absorbed soil waters along with the minerals get translocated or transferred to the aerial parts of the plant. Then third one is the prevent soil erosion by holding the soil particles. And in many plants, the roots are modified to serve many secondary functions like the food storage, mechanical support, and various physiological activities other than absorption. That means the main function is the absorption of root. We know the main function of the root is the absorption of soil water along with the minerals from the soils and translocated to all aerial parts of the plant through the xylem. But other than this absorption of soil water, the other functions like the storage of food material, mechanical supports, and various physiological activities other than absorption of soil water.
modification of roots. Many roots undergo modification for carrying of function other than normal, that normal one, that is the absorption of soil water. Some of the modified roots are normal while many of them are adventitious. Normal roots are modified for storage of foods. Some roots become solemn due to the storage or the accumulation of the maximum food material inside it, and fleshy due to the stored of these food matters and assume their the different shapes rather than their normal shape. So the first modified root, which is modified for the storage of food material. Here, the first one is, this is the type of the taproot which is modified for the food storage. Here, the fusiform root. Here, the root with hypocotyls becomes solar and the swelling is maximum in the middle, and which is gradually tapers toward the both the ends, that is base and apex. Example here is the Raphanus sativus, that is the radish, and the root which is modified for the storage of food material. In some plants, this Raphanus sativus, that is radish, which is a seasonal plant. These plants can complete their life cycle within a one season. That means one season which is of about the 4 months. So in some plants, the roots gets modified. The root get modified for the food storage. Why? Because their leaves or their branches or their stems is not capable to store this food material. In such conditions, the root get modified for the storage of food material. So, in case of these Raphanus sativus or the radish, the root, when the leaf system is well developed, the leaf synthesize the maximum food material. When after synthesis of excess or maximum food material, this excess food material get transferred to the roots and it get storage, and due to which the roots get increases their size and it assumes the various shape. So in case of Raphanus sativus, the root is act as a storage organ. That's why there is a maximum food material is stored, and these normal roots of this Raphanus sativus assume a shape which is also called as a fusiform root, in which both the ends of the roots, base as well as the apex, both the ends has the slightly tapering, and at the middle position, the root gets solar. So these types of the modified roots, which is found in the Raphanus sativus, which is known as the fusiform root, which is modified for this food storage. Second one is a conical root. The name indicates that the cone-like appearance, just like the ice cream cone. Here also the root is fleshy and it is a broadest at the base and gradually tapered toward the apex, like which is assume a shape like a cone-like shape. That's why these roots is also called as the conical roots, and which is found in a Daucus carota, which means the gaza, the local name of this Daucus carota. The conical roots, which is also fleshy and which is also common dish, or which is also used as a vegetable in for making the salad. Third types of the modified taproots, which is also modified for the storage of food material, which is known as the naphiphore, which is found in the Beta vulgaris or the beet plants, the beetroot. It is a very much swollen at the base and with the hypocotyl, but abruptly tapers toward the apex as in beet and turnip. That means here the apex of the roots, these beetroots, it is a very tapering, and at the middle it is get very bulbous or very swollen, and this is one of the modified root which is modified for the food storage found in the Beta vulgaris or
हम इसे लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बीट प्लांट, विच इज ऑल्सो कॉमन मेंबर ऑफ फॉर मेकिंग द सलाड. Then second one is the adventitious roots, which are modified for the storage of food material. So these napiform, conical, and fusiform, these are the modified roots for the storage of food material. These are the modified taproot. Then the second one is the adventitious roots, which are modified for the storage of food material. These are the tuberous roots in plants like the sweet potato, which grow on the surface of soils, and some of adventitious roots developing from the stems and become swollen and fleshy due to the storage of food materials, and do not have any regular shapes, जो जिसे हम कहते हैं कि रताड़ू. These are the sweet potato, and these roots are also called as the tuberous roots. These are the modifications of the adventitious roots for the storage of food material. And these tuberous roots do not having any particular shape. They are called the tuberous roots. Here, these are the tuberous roots. They are arising in a cluster. Second one is the fasciculated roots. In asparagus plants, in local language, the name of the local name is shatauri. These are the good number of tuberous roots are produced from the stems and forming a bundle or fascicles. That's why these are called as the fasciculated roots. That means so many, or the number of, they are in a bulk or in a cluster. That's why, and they forming, and they are also the storage roots, the storage adventitious roots for the modification of modification for the food material, and they are the roots which are produced from the stems forming a bundle or the fascicle, or simply they are growing in a number. These are the fasciculated roots, the modification of the adventitious roots for the food storage, and the big examples here: the stimuli, the asparagus, the sucmuli. Then the another one is the nodulose roots, nodules. Here, these are the nodulose roots in a mango ginger. You know the mango ginger. The local name is ambihadal, and the adventitious roots suddenly become swollen at the tips, and they are called as the nodulose roots. This one is the examples, or the this one is a diagram showing the how nodules are formed are just behind the root apex. These are the different types of the root nodules. Example is a mango ginger. Then another one is a moniliform, or these are also called as the beaded roots. In many grasses, the swelling are often found at a frequent intervals, giving the root or the beaded appearance, and these particular roots are called the moniliforms or the beaded roots. Here, the structure of this, the diagram of this moniliform or the beaded roots. Here, the shape or the appearance of this moniliforms or beaded roots, it's just like in a so many beads, they are in a single thread, and they are forming like a necklace-like structure. That's why these are called as the moniliform. बीड्स मीन्स दी जो मनी आते हैं धागे के अंदर, एक धागे के अंदर बहुत सारे मनी है, और एंड दिस मनी और दिस बीड्स आर प्लेस्ड एट specific intervals. That's why these are also called as the moniliform or the beaded appearance or the moniliform roots. Then another modification of the roots, rather than this absorption, the roots are modified for the another purpose. The crop roots are normally underground organs, but in some plants, some roots develop completely the in aerial or above the ground, and so are aerial, and in a common banyan trees of these banyan trees having very religious importance in our country. And
often found to hang freely in the air and from the branches. That means these prop roots are arising from the branches, the aerial branches, and which are growing toward the soils. And in course of time, they reach the soils and become stouter and serve as so many extra supports or the props. Props means the extra supports to the plant. Thus, they help the stems bearing in a weight of the heavy crown, and these are called as the prop roots. In some cases or in some older plants, we can't find which is the main trunk of the plant because they after so many years, these ficus plants or the banyan tree produces or develop so many prop roots, and they look like the trunk of the plants. So that's why we can't identify the after so many years which one is the main trunk of the plant. So this is about the prop roots, adventitious roots, which is modified for giving the support to the plant, or they help the stem in bearing the weight of the plants, and these are that's why called as the prop roots. Another one is the stilt roots. These are the also supporting roots in plants like the screw pine, and quite a good number of adventitious roots develop from the basal part of the stems and go downwards obliquely, and these roots helps the plants in maintaining the upright positions due to the increase the weight of the plants. Some of the nodes produces these steel roots which give in the extra support to the plants. Here, this is the example of the development of these steel roots in the screw pine plants from some nodal portion of the stem of the plants. Third one is the climbing roots. Big climbing plants like the beetle or the money plants and the vine, etc. Uh, produces some advantageous roots which climb to the supports and then help the plants in a climbing. The common example is a climbing roots in our the household uses the plants which is growing the money plants, beetle. They often secrete sticky juices or develop a disc-like structure for that purpose. So this is the climbing roots which is found in the plants, the beetle plants or the money plants which is growing in our houses also. Then the epiphytic roots, epiphytes. Epi means above and the phyta means the plants. The plants which are growing on the another plants, these are called as the epiphytic plants, and these plants produces roots, and these many epiphytic plants like the orchids produces the long roots which freely hang in the air, and they have some they have the spongy and velamen tissue, and with the help of the spongy and velamen tissue, these epiphytic roots absorb the atmospheric moisture, and at the exterior by means of which they can absorb from the atmospheric moisture or from the air. So these epiphytic roots which are found in the orchids and some epiphytic plants which are commonly found in our the Melghat regions like the Chikaldara and the Dharni Tehsil. The fifth one, modified roots, the sucking roots or the hostoria. Sucking roots or the hostoria develop in the parasitic plants like the Kasputa or the dodder. The parasitic plants, parasites means the plants which are growing completely on the or with the plants which uh, derive their nutrition, or simply the plants which absorb this water as well as the food material from the host plants. These are called the parasitic plants.
or which are completely dependent on the other plants for their nutrition as well as the shelter. These are called as the parasitic plants. And these parasitic plants, like the Kaskuta or the common name of this Kaskuta is Amarvel, or the which is commonly found on these soybean plants, which are the yellowish in color. These roots penetrates into the body of host and grow and draw the nourishments from there without caring to manufacture their own food. That means these plants cannot synthesize their own food material. They just develop a sucking organ or the hostoria, and this hostoria penetrate into the another plant, and from this hostoria they receive the food material where the from this host plant. Here the uh, examples of this Kaskuta, which is growing on the soybean plants. Then the breathing roots or the pneumatophores. Here the diagrams of the pneumatophores. These breathing roots, these roots are produced by the plants like the rhizophora, the avicennia, which are the plants which are commonly found in the seashore or the marshy places or near the saline habitat, where the soil is very poor in oxygen or the soil is very salty. Here, some roots with pores at the tips and comes vertically surface to the soils and carry on the gaseous interexchange outer atmosphere, and these are also called as the pneumatophores. Pneumatophores, these are the specialized roots which are modified for the breathing on those plants which are growing in marshy habitat or near the seashores. In such condition or in such marshy habitats, the soil having the excess concentration of salt, and there is a very little or less amount of oxygen present in there. In such cases, the plants, example like the rhizophora and avicennia, these plants generally the growth of the roots or the roots are growing positively geotrophic. But in this rhizophora and avicennia, which are growing in marshy habitat, some of the roots which are growing from this or toward the sunlight or above the soil toward the sunlight, and these roots having some minute pores on it through which there is an exchange of gases takes place. And these roots which are growing above the soils, these are called as the pneumatophores, and these pneumatophores are found commonly in the rhizophora and the avicennia plants. These are the common example here. These are the pneumatophores. Another one is a floating roots. Floating roots. Here the diagram or the figure showing the floating roots. In aquatic plants, in a fuchsia, some peculiar adventitious roots develop from the floating branches, and they are light, soft, and spongy due to the presence of air spaces, and beside facilitating respiration, they give the plants uh, buoyancy for the floating on the surface of the water. So these are the floating roots. These are like here. These are the floating roots. With the help of this root, the plant can easily float on the surface of the water. Then the last one is the assimilatory roots. Assimilatory roots means assimilation means the plant leaves are the green in color due to the presence of the chloroplast, and this with the help of this chloroplast, sunlight, and the CO2, the plant can synthesize the food material which is called as a photosynthesis process, and this is the synthesize the food
in the form of the glucose or the carbohydrate, and which is nothing but the assimilatory or the assimilation. Likewise, some roots, these are also called as the assimilatory roots of the plants like the tinospora, means the goodwill, hang freely in the air and develop a green color, and they can manufacture the food material. And these the submerged roots of the trapantas and coming out in pairs from the nodes and green, and they are also performing a function as a assimilation of the food or the synthesis of the food material. Here, the some of the assimilatory roots found in the trapa plants. The roots are the green in color, and they also performing the functions of the photosynthesis also. And these roots are also used for the vegetative multiplication. Vegetative multiplication, the common vegetable plants like the trichosanthes, the sweet potato are propagated by means of the roots, and many garden plants are also multiplied by the root cutting. That means most of the plants roots having capacity to regenerate a new plant. So this is about the uh, modifications and the morphology, the characteristics and different types of the roots, the different types, the tap roots and the adventitious roots, which are found, the tap roots which are the commonly found in the dicotyledonous plants, and the adventitious which are commonly found or the characteristic features of the monocotyl plant, and their various modification, modified. The normal function is the absorption of the water, but rather than this absorption of water, the another functions like the storage of food material, giving mechanical supports, and the photosynthesis or the assimilation. So these are the various root modification are developed by the different plants. So this is all about the roots, their morphology and their types and the modification. So here, Sir, I think there is a question in chat box. okay, man. Sir, can there be any plant which can have more than one type of modification of roots? Same No, plant? ma'am. No, ma'am. Only one plants having only one types of the roots are modified for any one kinds of the functions or the purpose. Because in case of the Raffinus sativus or the radish, the stems and the leaves or the branches are not capable to store the food material. That's why these uh, roots having uh, modified or roots having only capacity to modify for the storage of food material. So only one modification is done by the roots. Okay. Any other question from students? Rutuja More's question was that. Hmm. So is it clear, Rutuja? Okay, I think it's clear for her. Yes. She is saying yes, ma'am. Okay. Thank you, Dr. Khandare, for your lucid lecture. And I think the students are also get along with this particular presentation. And they found some aspects knowledgeable, and the illustrations is good also. Ma'am, over to you. Just sum up, please. So 1 minute, sir. I am before that. I am very much thankful to this department and giving the opportunity to deliver such online lecture on this online platform. I am very much thankful to the Department of Botany, Shri Shivaji College, Akola, for Okay. especially Dr. Professor and असंच मधून Dr. मधून Kokate. लेक्चर डिलिव्हर करत राहा. आमच्या अकॅडमिक्सला थोडासा हातभार लावायचा.
बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली सर, बिल्कुल सर. Then thank you very much, Dr. Koche sir, Dr. Dandigi madam, and Dr. Adil sir, Shubham, and then Gavin Chaukhande sir, and all the dear students, because I am also the production of the same department. Thank you very much, madam. Thanks a lot once again. Thank you, sir. Thank you, Kandare sir. So we are happy to have you as a resource person, because you was the student of this department, but now you are having knowledge so that you can deliver the lecture for our students. So you are now acting as a resource person. You are the PhD student of our department under the able guidance of Dr. D.G. Bhadange sir. So you have prepared very nice presentation here, and you have delivered it also nicely. Uh, the topic was really vast, and but you have covered it nicely. You have presented it nicely. So on behalf of Department of Botany, I am thankful to you. And do come and visit the department. जसं सरांनी सांगितलं तसं वेळोवेळी आम्हाला मदत करत राहायची आहे अकॅडमिकली, लेक्चर्स डिलिव्हर करत राहायचे आहे. ओके, थँक्यू. So I thanks every faculty member of this department for their efforts to make this lecture series happens, and I also thanked all the resource persons, Dr. Imran, Dr. Pranjali Deshmukh ma'am, and Dr. Khandare for their valuable guidance and time. So, and I also thanks to all the students, as it's their duty, but they have joined for this online lecture series, and hope they will get benefited from this. I thank you all again, and I now deactivate the link. Thanks again. Thank you, sir, once again. Thank you, Pranjali. So we will conclude here. Okay. These lectures, they are available on YouTube. We are providing you the link for this. Okay.